introduction. I'm SUBHASHIsh GHOSHAL. I'm completely from Delhi. I had my education in Delhi. I did my honors in chemistry, thereafter some post-graduation courses, thereafter the doctorate, in between which Hindi English मिला के बोलूं, दिक्कत तो नहीं है, right? तो उसमें क्या है कि मैं जैसे कुछ trivial और भी courses किए हैं, like learning and development course and all those. किस particular stage पे मैंने ये declare किया that I wish to be a motivational speaker. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे याद है आज से 20-25 years back, 30 years back, मैंने कहीं एक दिल्ली के कमिश्नर, MCD कमिश्नर के सामने एक प्रेजेंटेशन किया था. It went so well. मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि यार मुझे बोलना चाहिए. बोलना somewhere is there inside me and I should speak and people should listen to me. उसके लिए फिर मैंने तैयारियां शुरू की. Different, I read different books of motivation. मैंने motivational speakers को देखा. So then, I listened to my inner calling. तो जीवन में अपने inner calling को जरूर सुनना. What your inside is saying. Her inside, your inside, everybody's inside. Calling is different. From person to person it will vary. From time to time also it will vary. जरूरी नहीं है मैं आज बोल रहा हूँ कल कुछ और नहीं करूँगा. It might decline. मेरा ये फेस decline भी हो सकता है. मैं बड़ा भी हो सकता हूँ. मुझे नहीं मालूम. I do not know. But yes, today I wish to be a motivational speaker, and I wish to be the best motivational speaker on earth. सोच तो सकते हैं ना. हो ना हो. We should have big dreams in life. Thinking should be rich. This is very important. स्वामी विवेकानंद का नाम किसने नहीं सुना? Everybody has heard. You know वो कब पॉपुलर हुए थे? He went in 1893 सितंबर 11 की बात है. 3 या 3.25 का टाइम था. He was the 31st speaker in Chicago conference. 31st speaker. सुबह से स्वामी जी को इनवाइट किया गया था 11 बजे 12 बजे कि आप आइए पोडियम पे बोलिए. उनकी हालत खराब थी. मैं भी बोल रहा हूँ, this is he has mentioned in his books. He was not able to speak. 3 बजे के करीब उन्होंने पूछा नहीं वहां पे और उनका नाम अनाउंस कर दिया. स्वामी जी स्टेज पे आते हैं. 7,000 people were there in the auditorium. सुबह से इस तरह के ladies and gentlemen ऐसे तो लोग शुरू करते हैं ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को. तो वो भी गए और उन्होंने कहा brothers and sisters of America. उन्होंने ये कहना था 7,000 लोग 7,000 people, the august audience, they stood on their feet. और उन्होंने तालियां बजाई कम से कम 2 मिनट तक. इस बीच में वो बोल नहीं पा रहे थे. क्या था? भाई और बहनों कौन नहीं बोलता है इस दुनिया में? उसमें क्या स्पेशलिटी थी? बिकॉज ऑफ करेक्ट. लोग जुबान से बोलते हैं. He spoke from his heart. So my humble request, आज जो कुछ मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा आप लोगों का. Try to connect yourself with me. You will learn a little. आज मैं basically how time is you can utilize profitably in your life. About that I will discuss. Prior to that, आप लोग कौन सी क्लास में हैं सब? 11th. 11. आज से I think 45 years back मैं पीछे जाऊँगा and I will utter one of my experience of my 11th class 45 years back. मेरे को डिक्लेरेशन कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था स्कूल से. एक ही बच्चे को लिया था. I do not know why I was selected. Anyway, I was selected for that declaration contest. मैं स्कूल में गया and the time I was there, मेरा नाम अनाउंस हो रहा था. सुभाषिश घोषाल, प्लीज कम टू द स्टेज अर्जेंटली. मैंने लेफ्ट विंग से एंट्री ली. I took the entry from the left wing, stood behind the rostrum.
और मेरे आगे बिल्कुल जैसा होता है ना, when you enter in the daytime to the cinema hall, आपको कुछ नजर नहीं आता है. I could not see anything before. And धीरे धीरे जैसे visibility clear होने लगी, I found suddenly एक spotlight मेरे face के ऊपर पड़ता है. That made the situation worsened for me. तो कुछ नजर नहीं आ रहा. धीरे धीरे जैसे visibility clear हुई, I found sea of heads. Sorry sir. न जाने कितनी आंखें मेरे को दिखी. ऐसा सिचुएशन पोडियम में मैंने कभी नहीं देखा था. I never faced such a congregation in my life. थोड़ी देर में उनको realize हुआ that my legs were trembling. My throat was choked. It was dry. I was profusely sweating. बहुत पसीना आ रहा था. And I was caught by stage fright. घबराहट सी हुई थी मुझे. और इस बीच में constantly announcement हो रहा है, सुभाषिश घोषाल, please speak on the subject given to you. I was absolutely numb. एक स्टैचू की तरह खड़ा था मैं. एक वर्ड नहीं बोल पाया था. नेचुरली सामने के बच्चे हिंदी में होंगे. Meanwhile, मैंने रियलाइज किया, someone came, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, and within next 1 minute I was out of the school. उस स्कूल के बाहर खड़े होके tears well down from my eyes. With shattered pride, जो disgrace, disrespect, embarrassment, mortification I have faced that day, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ. आज भी अगर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 3 दिन से कंटिन्यूअस इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, जो मैं रोज पढ़ता हूँ. इसको भी पढ़ता हूँ और भी पढ़ता हूँ. But preparation is very important in life. That I meant, this is my first lesson to you. Not only on stage, not only आप किसी थिएटर कर रहे हैं, not only into any examination, prepare yourself. उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. So that is one thing I wanted to share. So embark with me on a life-changing adventure. Let us start. I'll go back before my slides of time management comes, which is truly related to success. I will go 335 BCE. You know BCE stands for Before Common Era. Do you know who is he? I am depicting whom? Alexander. Very good. He was the greatest king known on earth. His empire spread from Macedonia to Egypt, from Greece to parts of India. ये उनकी हालत थी. But this king, this emperor, he died at the age of 32-33. He was poisoned. Question is, when he was dying, उसने अपने 3 जनरल को समन किया, उनको बुलाया. उन्होंने कहा, I have to tell you my last 3 wishes. 3 विश मुझे देने हैं आप लोगों को. 3 विश देने हैं. And the first wish he said, the best of the doctors will carry my coffin. And second, जब मेरा कॉफिन का प्रोसेशन जा रहा होगा, whatever wealth I have acquired till date, वो सारा scatter कर दो, strewn it on the road. It was strewn. And third wish, that my hands should be left free outside the coffin. मतलब it should hang. तो the general said, जो उन तीनों में से कोई एक ऑडिशनल जनरल था, इसे कीजिए, हाउ कम सर आप ये विश क्यों मांग रहे हैं? कहता है, I want to tell the world कि in the face of death, even the best doctors cannot save you. People must know on earth, and he was so right. My second wish is that the wealth that I have acquired on earth
जो भी आप इस पृथ्वी पे कमाते हो, you live it on earth, लेके नहीं जाना। And my third wish is that my hand should be left free. That is, जिस हाथों से कमाते हो, उन्हीं हाथों से आप कुछ ले नहीं जा पाते। When the most precious and the most greatest thing of your life is vanished, is exhausted. You know what is that? It is time. इसको वो भी चलेगा। वीडियो म्यूजिक म्यूजिक अपने आप ही आ रहा है। चलो चलो। I can do that, sir. Can I? So that is time. The best doctors to carry my coffin, क्योंकि in the face of death, no one can save. Road to be scattered with my treasure, so that people must know that आप जो भी acquire करते हैं, आपको यही लेके जाना पड़ता है. And my hands to swing outside the coffin, that shows we come empty-handed and we go empty-handed. After the most precious and the greatest treasure is exhausted, and that is time. So now I come to the slide of time management. How much time do we have in life? कितना समय है हमारे पास? See, on earth we have people who are good looking. There are people who are average. We see people who are tall. We see people who are of average height. There are rich people. There are poor people. They are disabled. There are strong people. So एक variety है, लेकिन एक quality भगवान ने दी है that is equal and uniform to the entire mankind, and that is we have 24 hours with ourselves. Whether it is Amitabh Bachchan, talk of Dhoni, talk of Mother Teresa, talk of Gandhi जी, ये लोग अपने पीक पे चले गए, उसी 24 hours को यूटिलाइज करके। am I right? ठीक है ना? और कई लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। टाइम इज सेम, इट कैनॉट बी शॉर्टेज, इट कैनॉट बी मॉर्गेज, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरी सेकेंड टाइम इज लीकिंग फ्रॉम योर लाइफ। नाउ एक्सपेक्टिंग कि मैं 100 साल जीऊंगा, एक्सपेक्ट अज्यूमिंग, तो कहाँ हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है? I'll show you. Expecting 100 years, spreadsheet is 35 years in sleep, 11 years in study and education, 10 years in holiday and recreation, 9 years in rest and illness, 8 years in commuting and this. बचता क्या है? 16 years. That is near about 6,000 दिन। अगर हम 100 साल जीते हैं, हम 36,500 दिन जी रहे हैं, उसमें से 6,000 दिन are the actual time that you get to elevate yourself, to differentiate yourself from the world. See, अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, in whatever status you are, today you are all same and equal to the 7 billion population that is there on earth. You have to segregate. तो 7 billion से अपने आप को separate कैसे करोगे? You have to select that. You have to identify कि मैं अब जैसे धोनी ने अपने आप को segregate कर दिया है, तेंदुलकर ने अपने आप को segregate कर दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को segregate कर दिया। You know him, he is the prime minister। हम सबको 7 बिलियन लोगों को नहीं जानते हैं, बट हम जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनको जानते हैं। ठीक है? So segregate yourself, अपना posthumous image लाइफ में क्रिएट करना। Some time management principles I'll give you today, and first is set your goal. I still remember one person was riding on a horse and galloping at a very high speed. A person standing on road asked him,
Where are you going? The person on the horse said, I don't know, ask the horse. There is nothing to laugh. This the same thing is happening with each one of us. 90% of people, they are riding on horse. They do not know where they are going. कुछ नहीं मालूम. They do not have any goal in their life. उनको क्या अचीव करना है नहीं मालूम. They have no aim, no objective, no mission, nothing. If you do not have a goal in life, success word तो बहुत दूर है लाइफ में. Now there are two types of goals you can have. One is general goal. General goal is जो बड़े routine के goals हैं in your life that yeah I must study. आप एक goal बना लेते हो, this is the useless thing. Until and unless your goal is a definite goal. Definite goal means the goal that is measurable, that you can evaluate. Like when I thought of becoming a motivational speaker, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था. मैंने कहा मुझे कहीं कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ मोटिवेशन पर ही बोलना है. And I started lots of reading of book. और मैं एक किताब को कई बार पढ़ता था. Then I started taking notes. फिर my own experiences of life took me to this place today. So definite goals are like I want to be an actor, I want to be a sports person, and मुझे इतने टाइम पीरियड में इस काम को करना है. I wrote a book. The name of the book is I Can, You Too Can. मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो. Because अभी उतना टाइम है नहीं, so let me not jump into that particular thing. But when I started that, I set a goal, and the goal has to be smart. It has to be specific. It has to be measurable. It has to be achievable. It should be realistic and time bound. जब मैंने किताब लिखा था, तो I was very specific. मेरा टॉपिक क्या होगा, किस पर्टिकुलर चीज पे मैं लिखूंगा. I was specific. In measurable, I knew कि मैं 250 पेज की किताब लिखूंगा और एक पेज में इतने वर्ड रहने चाहिए, and इतने टाइम पीरियड पे मैं लिखूंगा, because that thing should be achievable. और मैं हफ्ते में इतना जरूर प्रोग्रेस कर जाऊंगा. It should be realistic and time bound. I take 6 months के अंदर I'll finish my book, and I did it. Eat the frog. This is very important. इसका टॉपिक बड़ा अजीब है, but you know thousands of books have been written on eat the frog. Best book is by Tracy Trine. उनका नाम है. उनका बुक का जो टाइटल है वो है eat the frog. It is on procrastination. Anyone aware of procrastination? It's avoid doing things on time, right? Now what is frog here? Frog depicts the most important thing. अगर आपके पास 10 काम आपको दिए हुए हैं, 10 job, तो 99% we select the easiest one first, और last में हम select करते हैं the most difficult one. Am I right? But the chronology should be reversed. You should take up the last job first and the first job last. उसमें क्या होगा? Procrastination will never come into your life. अगर आपके पास लास्ट के 2 9th और 10th जो भी है, उसमें there are 2 frogs. One is uglier than the other one. Then eat the ugliest frog first. जो सबसे डिफिकल्ट है उसको पहले करो, because the moment आप उसको फिनिश कर देते हो, everything is like crystal clear water for you. So that is a very important topic. Eat the frog. Do the thing chronology. आप देखना chronology खुद बनाओ. इसमें से मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कौन सा काम है, and whatever it is, you finish that first, and the rest will be easy in life. Parkinson law works very well. Work expands so as to fill the time available for its completion. क्या होता है जब हम अपना एफर्ट कम कर देते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, और जब हम अपना एफर्ट बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाता है. I'll give you some example. जैसे मैं, कोई गौरव है और एक सौरभ है. मैंने गौरव को एक काम दिया अलग से बुला के कि आप इस काम को 1 महीने में कर दो, तो लेके चला गया.
Then I called Saurabh. मैंने उसको बोला ये काम सेम था, इसे 15 दिन में कर दो, बोले कि चला गया। 15 दिन के बाद सौरभ आता है, कहते ये लो जी का बिल्कुल प्रिसीजन के साथ बढ़िया काम कर दिया। 30 दिन के बाद गौरव आता है, कहते ये लो जी का गौरव never approached me in 15 days or a week time, नहीं होता, that is our mental block। आप लोगों को जैसे पूरा साल मिलता है, लेकिन प्रिपेयर करते हैं 1 महीने पहले, 3 महीने पहले। इसलिए जनरल मेरे टाइम में मैंने ये किया था। लेकिन जो मेरा पीपल जो पूरे साल इसको ब्रेक करके कॉन्स्टेंटली प्रॉपरली चलते हैं, सो डेफिनेटली देयर इज नो मैच जो लास्ट 3 महीने पढ़ते हैं या 2 महीने पढ़ते हैं और जो कंप्लीटली पूरे साल पढ़ रहे हैं। दैट इज आप कभी क्रिकेट मैच में देखना, किसी टीम ने 250 रन बनाया तो द सेकंड टीम scores 250 runs or 251 runs in the same over in the same time। ये कभी नहीं हुआ कि 3 घंटे के मैच में इन्होंने 250 रन बनाए, मैंने 2 घंटे में नहीं, never happened। That is Parkinson law। Now work in your prime time। आपने टीवी आप लोगों में से कई लोग देखते होंगे, वॉच टीवी एंड उसके जो चैनल्स हैं, मोस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द चैनल्स आप देखना शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही आते हैं। द रीजन बीइंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू अर्न द मैक्सिमम रेवेन्यू, जो एट दोपहर के टाइम में 1 लाख रुपए मिलता है, सेम when is shown in the prime time it pays you 40 lakhs 50 lakhs, that is the prime time। This prime time is there in our life also। If you study in the evening or whole night, that is not the prime time। The reason being oxygen fresh नहीं होता है, mind थका हुआ होता है। People may say मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, let him say, but if you change your pattern, if you come and start studying in the morning hours, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, मॉर्निंग आवर में the amount of oxygen is very fresh, atmosphere is serene and you are absolutely at the best of your time। वो आपके लाइफ का every day is the prime time of your life। And when you get up early morning, you give the best gift to yourself because that will take you to some other height। एक एक्सरसाइज बेस्ड लाइफ मैंने जानबूझ के रखा है। इट इज अ मस्ट विद ऑल यू पीपल, यू आर invigorating youths, you are the workforce of India। अगर लाइफ में एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं and in 168 hours if you are not spending 7 hours for yourself, that is 1 hour a day, you are inviting trouble, inviting illness for you। Don't do that। 1 hour, any kind of free hand exercise is a must। It opens the clocks of your mind and allows new subject to get in। Your brain becomes too sharp। This is a technique called Pomodoro technique। इसकी किताब है by some I think some Brazilian person has written। It's a very important, all over the world Pomodoro technique is being used and the technique is 25 मिनट पढ़ो, focus study। अब तो बना लो कि मैं 4 ये वाले पॉइंट मुझे करने हैं, 25 मिनट पढ़िए, then take 5 minutes rest, walk, come back, 25 minutes again focus, complete focus, again go for a walk for 5 minutes, again come back, study for 25 minutes। Then 3 बार करने के बाद then have a half an hour rest। This is Pomodoro technique। It works very well। जनरली क्या होता है, हम किताब लेके बैठ जाते हैं for hours we study, but there are certain parts of the brain that stops working after a certain period of time। तो इसमें जो रिसेप्शन होगा, इसमें जो कैच होगा, इसमें जो समझ होगा, इसमें जो आप पिक कर पाएंगे, that will be very very fast। फोकस बढ़ाएगा, डिस्ट्रैक्शन से हटोगे आप, and lot of things it boosts
motivation. So work for 25 minutes, give a gap of 5 minutes, it works like magic. ये हम सब लोगों को मालूम है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं. This is gravity of obstruction. What happens is, अगर आपने कुछ डिसाइड किया कि आज ना मुझे ये करना ही करना है, I'll do it, I'll finish it by evening. Obstruction, gravity of obstruction will come. Someone will call you, आपके दोस्त का कॉल आ जाएगा, कोई ड्यूटी में जाएगा, कोई रिलेशन में आपके घर पे आ जाएंगे. Lot of obstruction will come. आपको मालूम नहीं पड़ेगा, and the day end में कहोगे यार आज ही आना था इन लोगों को, ठीक है? So this is the gravity of obstruction. This happens exactly in the same way as the natural gravitational force. So what we did is a quick recap. That is goal setting. Set your goal for life. Set your goal for education. And define the goal. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा. सुनो ना सुनो आपकी मर्जी है. मेरा अपना एक्सपीरियंस है. मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं और मैं जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से प्लस उन किताबों को पढ़ के. Whatever goal you set in life, उसको लिख लो. I want to be a motivational speaker. This I write every day morning. Best of the people with best of the mind, with goal set in their mind, but have not written the goal. They seldom accomplish the goal. They are not able to fulfill it. ये देखा गया है. But the people, सिर्फ 3% लोग लिखते हैं वर्ड में कि मुझे ये करना है, मैंने लिख दिया. I've written it. 3% people write, and those 3% people accomplish their goal much faster than others. Simple magic है. You also can do it. But goal मेच्योरिटी के साथ बना हुआ गोल होना चाहिए. लिख लो उसको, लिख दो उसको रोज, एंड यू विल सी इट इज हैपनिंग. एक और चीज बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग 15-16 के एज में होंगे सब. लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू. लाइफ ऐसे ही हो नहीं रहा आपके साथ. लाइफ इज रेस्पॉन्डिंग टू यू. हर एक चीज जो आप चाहते हो आप देख लेना आपके जीवन में वो हो रहा है. ठीक है, बाद में और ज्यादा होगा. अभी का एक्सपीरियंस तो पेरेंट्स के साथ, इसके बाद और ज्यादा आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि लाइफ इज नॉट हैपनिंग, लाइफ इज रेस्पॉन्डिंग टू यू. इसीलिए अपना सोच इस तरीके से रखो कि वो रिस्पॉन्स जब आए तो आपको खुशी हो. गलत सोचोगे तो रिस्पॉन्स भी गलत आएगा. लाइफ विल respond to you in a different way. ठीक है? That is the way. So this is all about the time management principles and about the time management. Now, due to paucity of time, कितना समय है मैम? 10 minutes. 5 minutes, right? So I'll take up success. So success who doesn't want talk of any male, any female, even abled, disabled, theist, atheist, talk of rich, poor, any caste, any creed. Everyone wants to be successful. Because success, that gives you enthusiasm in life. That gives you fulfillment in life. That gives you a feeling of accomplishment in life. So everyone wants to be successful. But क्या सब successful हो पाते हैं? नहीं. What is the reason? वही चीजें हैं जो मैंने पीछे बताया है. 99% लोगों को घोड़े पे बैठे हैं and they are not aware where they are going. Right? Have goal setting. उसको focus रखो. So that is one point to be successful. कि क्या करना है लाइफ में? What is your mission? What is your objective? अगर mission का objective नहीं है, then success is far away from you. Far away. There are many definitions of success. मैंने अपनी किताब में लिखा है
7 billion people can give you 7 billion definition of success. आपकी definition अगर मैं अभी पूछूं, इन कितने definition of success? आप भी अपना definition दोगे, आप सबका definition अलग होगा. I also had my own definition. So I said that success is like winning a war, not every battle. सब battle को जीतने की जरूरत नहीं है. सिर्फ final match जीत जाओ, you are successful. But then I found the best definition. आज से हजारों साल पहले सॉक्रेटिस की मैंने एक कहानी पढ़ी about success secret. Can you imagine? You know Socrates नाम सुना है? The greatest philosopher on earth, the greatest polarizing figure on earth. One day, a youth approached Socrates in the evening, asking him, "Sir, can you tell me the secret to success?" Socrates says, "Yes, I will, but come tomorrow morning, early morning." वो बंदा सुबह 4:30 बजे Socrates के घर. Socrates was ready. At 4:30, they started morning walk. Long morning walk. Constantly, that youth was reminding Socrates that, "Sir, you morning walk करने नहीं आए हो. I'm not here to accompany you in the morning walk. Please tell me the success secret." क्या बताऊँ? I'll tell you. Walk for a little more. Walk. बीच में परेशान हो जाता है that youngster become absolutely fed up. Then he finds that there is a pond coming, and the road is going to stop there. Socrates वहाँ जाके कहता है, "अब now you tell me." कहता है, "No, this is not the time. Come with me." He holds his hand. और उस pond के अंदर ले जाता है. In the pond, he reaches absolutely center of the pond, where their bodies were neck deep. आदमी कहता है, "पागल है, he's a bad man, Socrates." कहता है, "Where is the success secret?" कहता है, "Now I tell you." The strong hands of Socrates goes on his head and dips his head and immerses in the water. That man was absolutely youngster, was breathless. He struggled hard. But the strong hands of Socrates was not giving him the freedom. He was about to be faint in the water. जब Socrates छोटा था उसका comes up. कहता, "When I released you and your head was out of the water, what you wanted to do?" And I wanted to breathe. कहता, "When you want anything in your life, like you wanted to breathe, you will get success, and no power below or above the earth can stop you to get that. So why please अपना ideal, अपना focus, अपना goal इस चीज पे रखो, and the way he wanted to breathe और कुछ नहीं करना चाहता था other than breathing. Same way, the same frantic effort, in the same fervor, the same passion. If you work toward your goal, success is yours. And this is the best definition I found. Now there are certain tips to success. Usme hai, there are a lot of things. It can go another 2 hours. But I'll very hurriedly take up one thing, that is believe in yourself. I have 5 minutes. Yeah. So believe in yourself. This is very important. I am holding a remote. Is it true? Yes, no? No. No. Okay. So here I am holding a goggles. Is it true? No. No. Why is this is what seeing is believing. आपको जो दिख रहा है, your thoughts are limited to that. Your thoughts are limited to what you see. अगर इसी तरीके का थॉट प्रोसेस वर्ल्ड में सबका हो रहा होगा,
तो आज इतना एडवांसमेंट नहीं होता. There are people who think beyond their thoughts. जो exist नहीं कर रहा है, they think beyond that. I'll give you one story. There's a deer called impala in South Africa. It can jump. एक जगह खड़े होके it can jump 15 feet. Very amazing. It can jump 15 feet. और उसको जू में रखा जाता है ना, तो कितने उसका जो फेंसिंग है, जो बॉर्डर बनाया जाता है ईंटों का, that is hardly 6 feet. It can easily jump, but it never jumps. You know why? Because खड़े होके जब वो कूदने के बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा, उसके सामने दीवार नजर आती है. You can see यार ये करने क्या है, यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा. It can't think of it. It never jumps. It never jumps. Point is, if it jumps, it can easily liberate itself. But क्योंकि thought process नहीं है, it doesn't do that. Our thought process is also limited. अगर Wright brothers अपने thought से आगे नहीं जाते, तो हवाई जहाज नहीं बनता. अगर मार्कोनी अपने thought process से आगे नहीं जाते, तो आज ये मोबाइल फोन वायरलेस सिस्टम नहीं होता. There are plenty of examples. We have tubes, all these things. 1000 experiment आपके थॉमस एडिसन ने किया. He thought in those dark days. He thought there is a possibility कि मैं रात को भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ चलेगा. He thought of it. He thought beyond his thought process. He transcended his thoughts. He went beyond that. And इस तरीके के आविष्कार हुए रहे. So point is, be a dreamer and try to think beyond. जो लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा, there you should make the things possible. I'll give you an example. Shah Rukh Khan is a renowned artist. I was reading his book a few days back. In his book, he has mentioned that when he was about to leave from Delhi to Bombay, his uncle said, "Yeah, they will not be able and you are going to become a hero there." So, lot many things negative told about me told, like you cannot dance, your height is not that, you are not that tall. बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है. There are lot many negatives. But he said, I think I have one strong point, and that is I do acting. That is acting is very. And once when I reached Mumbai, every morning after leaving the mattress in bed, there was a mirror, and I'll stand before the mirror and say, I am the best. He never said, I will be the best. He said, I am the best. ये वो आज भी करता है, तब भी करता था, and he went on doing it. He said only one thing, I am the best, and he became the best. So it is almost, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था, jot down your dreams. जो बनना है, लिख लो उसे, it will happen to you. He made it a point, despite of no influence, no money, no good look, no dancing, no height, but had believed in himself that I am the best, and he became the best. I think, thank you so much, you for your patient listening. ये मैंने नमस्कार नहीं बनाया हुआ है, so thanks to